Amrita. As of this cyclone, the weather condition is really bad. So today I'm going to review about a website. This website is a resume making website, and you will be really surprised that you can make your resume in your phone only. You don't need your laptop, desktop, no computer at all, just a mobile phone, and you can apply different jobs from your mobile phone. Let's see. You need to just click on any browser, and then you need to type resume uMresume.com, and then press enter or OK from your mobile phone or laptop. The best part of this website is that ये आपके मोबाइल फ़ोन पे भी वर्क करता है, और यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट अवेलेबल है, बहुत सारे रिज्यूमे के डिज़ाइंस अवेलेबल। आपको जो भी पसंद आ रहा है, जो भी टाइप आपको पसंद है, जैसे ही आप उस पर पॉइंटर लेके जाएंगे तो चूज़ दिस टेम्पलेट करके ऑप्शन आएगा। तो मैं क्लिक करती हूँ चूज़ दिस टेम्पलेट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आई एम फ्रेशर और वर्किंग। अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्रेशर में आते हो, और अगर आपका पहला जॉब है तो आप फ्रेशर में आते हो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस। अगर वर्किंग है तो वर्किंग में। तो मैं पहले फ्रेशर से क्लिक ओपन करती हूँ। जैसे ये ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा, एंड देन ये बुलेट, इस पर जब आप क्लिक करोगे फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड। आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक किया आपको अपना डिटेल फीड करना होगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मेरा फर्स्ट नेम अमृता, एंड देन लास्ट नेम तो आपको यहाँ पे डेटा ऐसे फीड करना है। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा बैक या फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो फिर से आपका ऑप्शन आता है। और बेस्ट पार्ट है प्रोफेशनल समरी। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। आई वॉन्ट टू ऑफर माई एक्सपर्टाइज एरिया एज एन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट विद गुड एनालिटिकल स्किल, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उसको अच्छे से रीड करो, और आपका बेस्ट सूटेड जो आपके प्रोफाइल में आप उसको ऐड कर लो। वैसे मैंने ये आपको दिखा रही हूँ, ऐड कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट, आपको आपका इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जिस पे आपने पढ़ाई किया है। And then you need to, if you want to add more, add option is there. Obviously you need to add more, so depending upon how much qualification you are having, this option will keep on coming and you need to add. So as I'll just show, if I'll click on add more, again option have came, so I'll just remove for the time being this one, and then you need to click save and next. As soon as I'll click, then internship, if you're a fresher, if you have done internship from XYZ company, you just need to mention the company, how many month internship you have done, maybe 6-month internship you have done, which year it was, 2015, and then project, what on which project you have worked for. So if you have any certificate course, you need to mention that, and then how many months. Okay, 1 month I'll write, and then institute, any institute name X Z you need to mention, but please read the correct data so that it will be very easy for the employer to go through your resume and offer you the desired position and desired job which you are looking for. If you have done more certificate course, you need to add more course, and then save and
next. As soon as you'll click save and next, again it will ask for your skills. Communication skill is very good, communication skill, and then level, which level is beginner, intermediate, expert, you need to mention that. And if you want to add more skill name, you can add more, and then save and next. And the best part of this website is it is free of cost. Like here, write achievement, what are the achievements you have, so just mention any achievement you got it, so you need to mention that. And then because it's vary from person to person what they have achieved. Maybe you got first prize in debate, and whatever you got, you just need to mention it, type it over here, and then save and next. So as soon as you'll click save and next, you need to upload your photo. So for uploading, you need to click, and then you can upload from your gallery. There will be option coming, and then you can select any picture of yours. Okay, as soon as you'll select, there will be, so if you don't want to add your picture photo, so you can skip this. So I'll skip this because I don't want to add my photo. So now if you'll see, you can see my resume is ready. And here, download resume, you can download this, you can download through PDF, and it is downloaded. So just see a overview you'll get. So resume is mainly of 2 pages. To make resume, I think it's less than 5 minutes. You can save your time with the help of resume.com, resume.com, and get your desired job. मौसम सीरियसली आज काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ साइक्लोन इफेक्ट पुणे में भी है. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends who really require this, and subscribe to my channel, click to the like button. Bye bye, see you in the next video.